ओके सो 19th या तो इसका एक इजी तरीका है इनफैक्ट जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट मतलब सेम रहेगी राइट और फिर जब इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो गई राइट कितनी हो गई वो ई टाइम्स वॉट एवर इट वॉज बिफोर मतलब क्या है कि अब वो जो भी डिस्टेंस को कवर करने वाला था ओरिजिनली अगर वो सेम वेलोसिटी रही होती अब उसका वो सिर्फ ई टाइम्स कवर करेगा सो उसकी जो अगली रेंज है मतलब कैसा था कि सपोज नॉर्मली कैसा रहता है कि ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तो अपन क्या करते थे कि अपन सोचते थे कि मिरर इमेज है आगे का जो मोशन हो रहा था उसका यानी कि ये फुल मोशन है अगर बीच में वॉल नहीं होती यहाँ पे तूने वॉल रख दी तो उसकी मिरर इमेज हो रही है यहाँ पे राइट ऐसा होता था अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे इनइलास्टिक है राइट मतलब पार्शियल इलास्टिक है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन तो नहीं है बट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज हो गई है राइट सो व्हाट दैट मींस इज कि यहाँ पे सो एक टाइम इंटरवल dt में अगर ये डिस्टेंस dx कवर कर रहा था तो अब ये डिस्टेंस e टाइम्स dx कवर करेगा सो इसकी जो रेंज है दैट विल जस्ट बिकम e टाइम्स ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन क्योंकि टाइम पीरियड स्टिल सेम है राइट इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी सेम है तो ये उतना ही टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए बट अब इसका डिस्टेंस e टाइम्स हो चुका है सो ये L है एंड दिस थिंग इज L सॉरी ये C है एंड ये चीज है R माइनस C राइट सो E टाइम्स ऑफ R माइनस C राइट उतना डिस्टेंस एक्चुअल में कवर करेगा और फिर अपने को इसका मिरर इमेज ले रहा है और मिरर इमेज लेने के बाद में ये जो पॉइंट है दैट्स मैप टू दिस पॉइंट तो मतलब कि ये जो चीज है दैट शुड बी इक्वल टू C राइट व्हिच मींस दैट E इज इक्वल टू C अपॉन R माइनस C राइट दैट्स द थिंग so the question of distribution is just C upon R minus C and R what is that so what is R R is just क्या बोलते हैं इसको the velocity so उसका square by the way so GH sine of 2 alpha right yeah so sine of 2 alpha that thing upon G so ये तो गया this H sine of 2 alpha is what R so D answer actually में correct है right so 19th question इसका D correct है what else time from A to O is C upon square root of G cosine alpha no that's not the thing because that's the time from O to A right yeah the distance C है and what horizontal velocity is just square root of G वो सब so that's time from O to A so C is correct what else is D correct time from A to O तो उल्टा जा रहे हैं तब हाँ ऐसा होगा so it will be next 20 oh shit ये क्या हो गया 20 question a series of inelastic balls whose masses are m, e square m are at rest separated by intervals with their centers on straight line. Okay, the first is made to imping directly on the second ball with velocity u. Then, okay, first is made to imping. Quotient restriction for the collision. The कौन सा कितने सारे collision इसमें तो हर collision के लिए same coefficient है. Okay. ठीक है the first is made to impact directly on second with velocity u then the first minus balls will be moving with the same velocity 1 minus e times u that's weird think about it ठीक है इस पर अपने मोमेंटम p ट्रांसफर एक काम करो ना इसको कोई वेलोसिटी तुम दे ही दो सो पहला जो बॉल था जैसे nth बॉल का मास कैपिटल m है और इसका मास क्या होगा e टाइम्स कैपिटल m सपोज ये वेलोसिटी v से जा रहा है राइट या फिर u से जा रहा है व्हाटएवर सो बाद में क्या हो गया u माइनस v और यहाँ पे आ जाएगा e टाइम्स ओह इट्स लाइक ओके यहाँ पे e भी आएगा यहाँ पे v आएगा सो इसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है इस बॉल की दैट्स v सो e टाइम्स ऑफ दैट इसकी वेलोसिटी का चेंज होगा बिकॉज मासेस वैसे है सो दैट मीन्स द क्वेश्चन द velocity of separation that will be v times of 1 plus e times v minus u or that's just equal to e times of u right yeah v so yes v is just equal to u right which means कि ठीक है ये जो है now that's going with u velocity और ये जो है ये बंदा जा रहा है with velocity u minus e times u which is 1 minus e times u right yeah
So the first n minus 1 balls will be moving with the same velocity 1 minus e times u. अच्छा कब कौन से टाइम पे? स्ट्रेट लाइन. वही तुम बताओ तो कि कौन से इस पे अपन कर रहे हैं. With the same velocity 1 minus e times u. I mean, yeah, I guess. ये u से जा रहा है फिर बाद में 1 minus e times u से जाएगा and then so on. ठीक है. सो मे बी ए इज करेक्ट एक्सेप्ट कि उन लोगों ने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया कि एन क्या है और हो क्या रहा है बट वॉट एवर. द लास्ट वन बॉल. अच्छा एन बॉल्स. ओके ओके लाइक दैट. हाँ ओके. सो फाइनल कंडीशन की बात कर रहे हैं ना ये. राइट. देन इट्स ओके. लास्ट वन बॉल विल मूव टू द वेलोसिटी u. यस दैट्स राइट. काइनेटिक सिस्टम इज हाफ एम यू स्क्वायर टाइम्स ये चीज. ओके ये तो चेंज होने वाला है. ओह गॉड लेट्स डू दिस थिंग. So half m times 1 minus e का स्क्वायर u स्क्वायर. बट उसके बाद में और क्या होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी. सो ये वेलोसिटी सेम है सबकी बट मास अलग अलग है ना. सो पहले के लिए 1 फिर दूसरे के लिए e फिर e स्क्वायर चलते जाओ. कितने इसमें n minus 1 राइट. पहले n minus 1 बॉल्स इस टाइप से मूव करने वाले. सो इट्स गोना गो ऑफ टिल e पावर n minus 2 आई गेस. राइट. और जो लास्ट बॉल रहने वाला है दैट्स ऑफ द मास e पावर n minus 1. सो प्लस हाफ e पावर n minus 1 टाइम्स m और जस्ट u स्क्वायर. दैट्स द थिंग. ये जो पूरी चीज़ है जस्ट इक्वल टू e पावर n minus 1 minus 1 अपॉन e पावर so just 1 minus 1 right. yeah. so और you can say okay इसका रेसिप्रोकल कर दो. so इसका चेंज कर दो 1 minus e पावर minus 1 upon 1 minus e. तो this is just equal to half m u square and then it's got 1 minus e times 1 minus e की power minus 1 right. yeah. and then plus half m u square and then you got e power minus 1 like that. so अपने को इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली. राइट. इसका क्या एडिशन इसका क्या होना है 1 minus e power minus 1 plus e power n and then you got this thing. so plus e power minus 1 ये तो गया. it's going to be this thing 1 minus e plus e power n in the denominator. sorry in the numerator. the bracket क्या बोल रहा हूँ मैं ब्रैकेट में. okay which is yes so it's correct. c is correct. next question t करते हैं. none of these okay तो अजीब है. next 21. 21 is a particle is projected horizontal with velocity of this thing from highest point of the outside of a fixed smooth sphere of radius a. okay. sphere and radius a का it's projected horizontal with velocity highest point से. ठीक है. so कोई भी velocity होगी इसकी इसको u बोल रहा हूँ. okay. then particle will leave the sphere with a contact when where the contact force. और ये fixed है ना. okay fine. particle will leave the sphere where contact force becomes 0. particle will leave the sphere at vertical distance a upon 6 below from the point of projection. okay 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 इस टाइप सा. तो कब लीव करने वाला है बेसिकली उतना ही है राइट. या फाइन. जब ये लीव करेगा लेट्स जस्ट से कि दिस एंगल इज थीटा. ओके राइट. आई गेस दैट शुड बी थिंग. ओके. और ये g ऐसे जा रहा है. दिस एंगल इज आल्सो थीटा ऑफ कोर्स बिकॉज़ वर्टिकल. सो mg cosine theta in this direction and mg sin theta अपने को फर्क नहीं पड़ रहा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी लेट्स जस्ट से इट्स ओमेगा राइट. v बोल दो इनफैक्ट वो बेटर रहेगा राइट. सो दिस इज वेलोसिटी v लाइक दैट. और व्हेनेवर इट्स गोना लीव तुम्हारा टेंशन जो है वो जीरो जाना चाहिए राइट. बिकॉज वो अब कांटेक्ट में है नहीं. सो एट दैट पॉइंट यानी फर्स्ट टाइम जब वो लीव या फर्स्ट टाइम जब तुम्हारा टेंशन जीरो का दैट्स व्हेन इट विल स्टार्ट टू लीव बिकॉज उसके बाद में नेगेटिव हो जाना चाहिए एंड देन इट कैन नॉट प्रोवाइड दैट. सो व्हाट यू हैव इज गॉट mp स्क्वायर्ड अपॉन r इज इक्वल टू mg cosine theta राइट. I guess so. Yeah, I mean that looks correct to me. Of course, of course. Yeah, or क्या? That should be the thing. That's just mg cosine theta. Okay, which means that v square is equal to rg cosine theta. But you know that v square minus u square is equal to right. Okay, initially u था ना. Yeah, that's equal to so ये चीज okay कितना नीचे गया ये it's gonna be
r times of 1 minus cosine theta, and that times g, and then times of 2, of course. That's the thing. So इसको यहाँ पे put कर दो, u square plus 2gr minus 2gr cosine theta is equal to rg cosine theta. So u square is equal to, ये तो जाके कर देगा, gr times 3 cosine theta plus 2. That's when this will happen, of course. And then u square is just 1 upon 2 rg, right? Radius a है, of course, so just half rg, each is half rg मिलेगी, which means that 1 upon 2 is equal to 3c minus, so plus 2, sorry, नेगेटिव उधर भेज दो. ये तो बहुत ही बड़ा एंगल हो रहा है. You mean, wow, that's not good. थीटा बहुत बड़ा हो रहा है. That shouldn't make any sense. ऐसे कैसे हो गया? Oh, यहाँ पे नेगेटिव 2 है, इसलिए हुआ ऐसा. Fine. It's supposed to be negative 2 like that. So it's actually supposed to be 2 plus 1 upon 2. That's 2.5. So C is really just 2.5 upon 3, which, yeah, I mean, it's okay. It's 5 upon 6, I guess. That's when this will happen. So C is correct. और क्या correct है? Particle will leave the sphere when the contact force becomes 0. Yes, I guess so. Particle will leave the sphere at a vertical distance a upon 6 below from the point of projection. So cosine theta की value ये है. So r times of 1 minus cosine theta is just 1 minus 5 upon 6. It's going to be r upon 6. So yeah. So I guess B is also correct. Next question. Okay. 22nd. The second is 2 bars connected by a weightless spring of stiffness K length in non-deformed state. L not rest on a horizontal plane. A constant force F. Okay, shown. ठीक है. Maximum elongation चाहिए और maximum compression चाहिए. Maximum compression in the spring is 0. ठीक है ना, वही सब है. So it's moving with force F, whatever. Right. So for maximum elongation or compression, इनकी relative velocity 0 होनी चाहिए. That we know, right? Yeah. मतलब वो calculate करो थोड़ा सा, you will get the thing. Okay. Right. Force F starts at mass is shown. Yeah, ये तो बहुत खराब होने वाला है. This is not nice because अगर ये constant force है और ये क्या smooth है, I guess, horizontal plane. Okay. That's not nice यार. अगर ये force like constant है, oh god, not nice. वैसे elongation this mean नहीं, अपने को फिर अगर ये सब करना है then you just have to go for इसकी reference M2 की. So with respect to M2 हो क्या रहा है, या फिर काम करो M1 की रेफरेंस पे जाओ. So yeah, according to M1, so इसका kx force उधर लग रहा है, so kx upon M1 is this guy's acceleration. So according to M1 हो क्या रहा है, that M2 actually feels a force like this, M2 times A, which is M2 kx upon M1, right? And it also feels a force like that, F. So acceleration है, that is so for this guy, or x by the way, elongation from this, of course, right? Oh, and by the way, एक और force feel करना है, which is just kx, so kx plus each चीज. So acceleration is really just kx upon m2 plus kx upon m1, right, and then minus f upon m2, of course, right? So yeah, which is just equal to, हाँ ठीक है ना, कर लूँगा मैं बाद में. तो फिर करना क्या है, maximum elongation in the spring, maximum, और initially क्या ये 0 पर है, right? Extension वगैरह. Okay. So ठीक है ना, this is just equal to k upon m2 plus k upon m1 times x minus f upon m2, whatever, right? Yeah, initially ये right 0 state पर है, so it's at x equal to 0, और फिर इसकी equilibrium state क्या होने वाली है, that will be x naught is equal to f upon m2 upon ये सारी this चीज, so f upon k and then 1 plus m2 upon m1, right? एंड M2 M1 क्या मुझे दिया है कि आपने को कुछ भी नहीं दिया है, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, नो बिग डील. वी नो कि इनिशियली x इक्वल टू 0 पर है, सो 2x नॉट इज द मैक्सिमम elongation एंड मैक्सिमम कंप्रेशन 0 हो जाएगा. सो यस, सो C is the answer and D is the answer, right? When M1 equal to M2 equal to M, at that point it's just like f upon 2k is x naught, right? Yeah, the maximum elongation is f upon k, yes, and maximum compression is still 0, yaar.
Can't you believe that? So right, A is correct, I think. So ACD, right? Yeah. Next question. Uh, yeah, of course. Next question. 23. 23 is two perfectly inelastic bodies of masses m1, m2 moving with velocities u1, u2 in the same direction, imping directly. Just select the correct alternative. There is no loss in kinetic energy. That imping directly. Achha. Inelastic bodies, perfectly inelastic bodies. Yes, there is loss in kinetic energy. It's not elastic collision. Come on. So A is just wrong. Okay. The लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? अच्छा ठीक है. सो इनिशियली क्या था? हाफ एम यू वन का स्क्वायर प्लस हाफ, ओ इट्स एम वन यू वन से, देन हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर. अब कितना हो गया? सो माइनस हाफ, यू विल जस्ट से हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम. सो पी इसका कितना है? एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू पूरा स्क्वायर अपॉन टोटल मास एम वन प्लस एम टू. दैट्स द थिंग, राइट? या. सो राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, आई गेस दैट मेक्स सेंस. सो अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है समहाउ. ये तो सही नहीं हुआ. कि थिंक अबाउट इट, कुछ तो भी करना पड़ेगा इसके लिए अपने को. लेट्स जस्ट से m2 इज इक्वल टू n m1, राइट? तो फिर मैं हाफ m1 बाहर निकाल लेता हूँ. देन जस्ट गॉट लाइक u1 का स्क्वायर प्लस n u2 का स्क्वायर एंड देन माइनस u1 प्लस n u2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n, राइट? दैट्स ओनली थिंग. तो चलो करते हैं इसको. हाफ m1 बाहर एंड देन व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? u1 स्क्वायर प्लस n u2 स्क्वायर माइनस ये सारी चीज, और जस्ट हैव टू डू इट, राइट? तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. सो ये डिनोमिनेटर अभी के लिए बाहर निकाल लेते हैं. 1 प्लस n बाहर निकाल लो. एंड व्हाट इज दिस होल थिंग गोइंग टू बी? सो ये टाइम्स ये, यानी कि u1 स्क्वायर प्लस n टाइम्स u2 स्क्वायर, फिर प्लस n टाइम्स इज लाइक n u1 स्क्वायर एंड देन प्लस n स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस इस सब का स्क्वायर. सो राइट, माइनस इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ सो यू गॉट u1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर u2 का स्क्वायर एंड देन यू गॉट प्लस 2 n u1 u2, राइट? तो ये कैंसिल हो रहा है, आई गेस ये भी कैंसिल हो रहा है. परफेक्ट. गॉट दिस थिंग. सो इट्स n टाइम्स ऑफ u2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर एंड देन दैट टाइम्स, okay, that minus 2n times u1 plus u2. Oh god. So n times of u1 minus u2 का स्क्वायर. Hey, I think मैं इसको ज़्यादा easily कर सकता था यार. Of course, you could have just done the relative velocity thing. Oh god. But अब तो हो गया. अब क्या? ठीक है, अब हो गया. It's like half m1 times ये सब चीज़ upon of course 1 plus n there we go. And n is just m2 upon m1 by the way. So it's like half, तो ये m2 upon m1 आ जाएगा. यहाँ पे m2 upon m1 आ गया. So half m1 m2 upon m2 plus m1, right? And you got u1 minus u2 का square, which is yes. So B is correct. Okay. After collision, they move with common velocity. Yes. Okay. There is no loss in momentum of system. That's also correct. Next question, 24th. 24th is, oh, it's a compression type. Comprehension type. Okay, paragraph first. Okay, क्या है? System consists of block A, block B, mass M, दोनों के mass M connected by light spring as shown. Okay, B को wall पे रखा है. The block A compresses the spring by 3 mgk from natural length, okay, of spring and then released from rest. Neglect friction everywhere. ठीक है, इसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, whatever. The acceleration of center of mass of the system comprising A and B just after A is released is, of course, it's just moving like that. क्या कितना फोर्स होगा इस पे? So it's 3 mg upon K compression है. Yeah, like K times of that. 3 mg is this force. So 3 mg upon M, that's gonna be just 3g. 3g is the acceleration of A. तो पूरे सिस्टम का क्या है? Okay, so 3g times M, 3 mg. फोर्स ही बोल दो ना पूरा. क्या कर रहा हूँ मैं इतना पूरा, right? Yeah, मतलब ये जो है this is actually suffering 3 mg from the wall. So of course 3 mg upon 2m.
तो 3/2g. सो फर्स्ट का आंसर बी. सेकंड का आंसर क्या है? वेट अ सेकंड. ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम. कम ऑन, मैंने ये डिसेबल क्यों नहीं किया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंप्रेसिंग ए एंड डी व्हेन ब्लॉक पी जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद द वॉल. जस्ट लूजेस कांटेक्ट, तो यहाँ पे तो मतलब हाँ ठीक है ना, जब जीरो कंप्रेशन रहेगा उसके ठीक बाद में, बिकॉज तब या इट विल एक्चुअली स्टार्ट पुलिंग इट. ओके, तब की वेलोसिटी क्या है? राइट, तब की वेलोसिटी. सो कंप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, ये उतना ही वापस भी आ जाएगा. राइट, ओके. तो फिर कंप्रेस हुआ, फिर ऐसे हुआ. At that point तुम्हारा जो total energy that is equal to half kx square is like half k times इसका square, which is 1/2, and then you got 9m squared g squared upon, that's the compression, right? उसका square करना है upon k square, but the thing is that times k is like this thing upon k. That's the energy, right? Of course, that's the whole energy. And then सिर्फ a move कर रहा है, by the way. Yeah, right. So this thing must be equal to just half mv squared, right? Till that point at least. So इसका मतलब क्या हुआ? That you know v square is just equal to ये सारी चीज 9mg square upon k whatever. Oh god. Right. Is this correct dimensionally? मतलब k क्या है? It's force upon distance. So mg's force वो cancel हो गया, just g up. Yeah, it's g times of a distance. So meters square per second square. Yeah, it's good. So v will just be 3g square root of m upon k. That's is the velocity. So you want half of that. That's the thing. So 3g upon 2 square root of m upon k, which is option B. Next question. Third question. Maximum extension is spring after the system loses contact with wall is right. So इसके बाद में oh yeah, just want the maximum extension. वो कब रहेगा? Of course when yeah okay, we just found out the velocity, right? That's equal to this thing for the center of mass. Okay, नहीं ये के लिए momentum total कितना है? Wait, do you have to worry about momentum or not? Just want the maximum compression. Actually, you do. So, yeah, ये दोनों साथ में वो दोनों साथ में मूव करेंगे with 3g/2 and then square root of m upon k, वो सारी चीज, right? Yeah. So, but half times of 2m. Okay, so just m times इसका square 3g/2 square root of m upon k का square. Right, that's the final kinetic energy plus जो भी इसका extension वगैरह compression जो भी है, like half kx square, that must be equal to initial energy, right? जो इसकी थी, which was half m times इस चीज का square, so 3g square root of m upon k का square, right? Yeah, that's the thing. तो चलो इसको करते हैं फिर, hopefully कुछ इतना बुरा भी ना हो. Got kx square is equal to, यहाँ पे 1/4 आने वाला है, 1/2 पे चला जाएगा whatever. इस चीज का गॉड ये बहुत बुरा होने वाला है. 9g square m square upon k I guess. Okay, times 1 minus यहाँ से 1/4 है but 2 times, so 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा. That point. There we go. That's the thing. So ये के हटा, यहाँ पे k square रख दो. X is just equal to 3mg upon square root 2 times k, which is option A hopefully. Next question. 24. Oh, sorry, ये कुछ अलग ही कर दिया. Okay, third का आंसर ये, right? Yeah. Next, second. Second paragraph. तो एक ही है क्या? Oh, very weird. ठीक है, integer type. So integer type. मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है seriously. Okay, first question. A block of mass 2 kg is released from rest on a spring A of spring constant 100 Newton per meter as shown. Okay, the block compresses the spring B through a distance of 10 centimeter. तो इसको हमने छोड़ा, फिर इसे compress किया इसको. Spring constant of spring B is this thing. अच्छा, okay, और इसको 10 centimeter ऊपर छोड़ा है. On a wait, what? Block of mass 2 kg is released from rest on a spring of spring. Okay. राइट, ये सब दिखाया है वैसे ही करो, वो डायलॉग पढ़ो ना. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बीज दिस थिंग. वेट व्हाट?
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वेट समथिंग, बी का क्या काम है इसमें, हो क्या रहा है एग्जैक्टली? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वेट व्हाट? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। स्प्रिंग बी कहाँ से आ गई, उसके बारे में तुमने कुछ बताया भी नहीं मुझे। रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्प्रिंग ए ऑफ, अच्छा बिना डायग्राम किस करते हैं। सो ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ऑन अ स्प्रिंग, ओके, ऑफ स्प्रिंग कौन सा जो भी है, द ब्लॉक compresses the spring B through a distance. Oh, okay, so spring B initially ऐसी थी। This is weird. But B के बारे में तो कुछ बताया भी नहीं है। स्प्रिंग B है पहले किसी थी एंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, बस इसके ऊपर रख दिया था। ओके, सो इनिशियली ऐसा रहा होगा एंड देन उसके बाद में ये और ये 10 सेंटीमीटर क्या है आखिर, इसको तुमने किया क्या, तू छोड़ा है क्या एग्जैक्टली? जस्ट टू मच स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, ये क्या क्वेश्चन है, तुमने बहुत बुरी तरह से डिफाइन किया है अपने क्वेश्चन को। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि स्प्रिंग बी की इनिशियल पोजीशन कैसी थी, वो क्या, कहाँ पर है, कुछ भी नहीं बताया। मैं नहीं कर सकता इसको, ये बहुत गंदा लिखा हुआ है, मैं इसको करूँगा भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, a block is shown in the figure is released from rest with the spring initially unstretched. The spring constant is this thing and mass of block is 1 kg. Find the maximum extension in the spring. अच्छा जैसे उसको छोड़ दिया and then you want to find the maximum extension in the spring, right? ठीक है, no big deal. Yeah, okay. So for maximum extension, of course, तुम्हारा जो dx upon dt है that must be 0 and that means velocity of this guy must be 0. Maximum या minimum दोनों के लिए. What that means इसकी kinetic energy 0 हो गई. So yeah, just नीचे जाएगा, कितने से नीचे गया, h से suppose अपने को पता है कि नीचे गया, right? अगर ये x से increase हो रहा है then ये भी अच्छा अगर ये x से increase हुआ then this must have moved by what how much? I guess x upon 2 because राइट, मतलब तुमने यहाँ पे x अपॉन 2 लेंथ क्रिएट की, यहाँ पे x अपॉन 2 लेंथ क्रिएट की, पूरी लेंथ आई तो स्प्रिंग से ही, तो फिर x आया, या एग्जैक्टली। So it's moved down the x upon 2, so like mg x upon 2 is the potential energy that changed, or that's just equal to half k x square. That's the thing, that's the maximum extension that should be doing it. So इसका मतलब क्या है कि ये तो गया x is just equal to mg upon k, और अपने को वैल्यूज दिए क्या, yes, so what's m, अच्छा mass is of 1 kg, g is, let's assume it's 10, and k is what, 500. Wow, that's big. Okay, and all of this is meters, so अपने को इसको times 100 centimeter कर देना चाहिए, which means that 2 centimeter is the thing approximately, or whatever. Next question, अगर जी लोगों ने 9.8 लिया तो हो गया फिर 3. A large mass m is equal to 20 kg and a small mass m equal to 2 kg are at the two ends of the string that passes through a smooth tube as shown in the figure. What? So ये क्या है, smooth tube है, large mass and small mass are at the two ends of the string. ये string, अच्छा, very weird. That's the horizontal plane. ये एंगल क्या है एग्जैक्टली, हो क्या ये, स्मूथ ट्यूब, हाँ, I don't know कर क्या रहा है exactly, whatever. The mass m moves around a circular path which lies in the horizontal plane. The length of the string from the mass m to the top of the tube is L, okay, and theta is the angle this length makes with the vertical. What should be the, I guess जो tube है वो actually इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए for this to be sensible, so something like this I guess. What should be the number of revolutions per second of mass m so that m remains stationary, right? So अगर suppose ट्यूब छोटी है then m का जो एक्स वाई मूवमेंट है वो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैपिटल m का, सॉरी नॉट स्मॉल m, तो हो ही रहना, ओके। दिस इज हाउ द क्वेश्चन शुड हैव बीन। उन लोगों ने बहुत ही बड़ी ट्यूब दे दी, बट व्हाटएवर। सो दिस इज मूविंग ऑन दिस प्लेन और ये एंगल थीटा है, व्हाटएवर, ओके। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, तो अपने को कौन से एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना, एंड दिस थिंग इज 10, थीटा क्या दिया आपने को,
Wait, what? Theta is angle is vertical. और कुछ अपने को दिया ही नहीं है. Just gave us theta. That's it, huh? Oh God, ये तो सही नहीं हुआ. Whatever, इसका टेंशन क्या हो जाएगा? It's mg and same tension throughout string रहने वाला है. I suppose. Yeah. तो फिर ये mg हो जाएगा, right? Of course. In the rotating frame इसके ऊपर force लग रहा है m omega square r. ये r रहने वाला है by the way. And इसके ऊपर mg भी लग रहा है. तो normal force भी लगने वाला है actually इस पे. The only thing is इससे horizontal component cancel हो जाए, बाकी अपन देख लेंगे खुद. Yeah. So mg cosine of this. Oh God. Minimum number of revolutions so that this remains stationary. Stationary. That's a wait. But ये तो एक actual like constant number है. इसमें minimum कैसे आया फिर? Smooth tube, okay. There's a path which lies the horizontal plane. The length of the okay. Friction वगैरह क्या इसमें? I don't know. दिखाया तो नहीं कुछ. Square tan equal to pi. Okay. थीटा का तो कुछ भी बताया नहीं है. That's just not good यार. How do I make anything of it? Because अपने को थीटा का कुछ बताया नहीं है. And अपने को ओमेगा के बारे में पूछा है, right? So what's the minimum omega? Oh, and अपने को by the way r के बारे में कुछ भी नहीं पता. So that's still a variable, right? R is a variable at least. Okay, there's gravity like this. चलो करते हैं फिर. So mg sin theta ये यहाँ पे लग रहा है. That's equal to m omega square. Oh, अच्छा वो sin theta अपने आप cancel हो जाएगा. Perfect, perfect, isn't it? M omega square and then r is just L sin theta. ये L बोल दो. So it's L sin theta. ये cancel हो गया. That's awesome. So since that it remains stationary, omega is actually a fixed number. तो अच्छा minimum बोला ही नहीं है. The number of revolutions. Right. There we go. Oh, by the way, it's actually capital mg here. Right. So omega square is equal to capital mg upon L. मतलब कि omega is just this thing. Per second चाहिए अपने को. So omega is in like omega is just 2 pi f, where f is the frequency. ये कितने rotations per second. So f is just 1 upon 2 pi square root of mg upon L. Right. Let's do this thing. So 1 upon 2 pi square root of क्या क्या है? M is 20, G is assuming 10, whatever, upon L. What is L? L is 10 centimeter. That's 0.1 meters. Right. Oh, mass भी रहेगा यहाँ पे. Sorry, वो कैसे भूल गया. Yes, that's the thing. So 0.1 and then mass इसका क्या है? 2. Okay, cool. तो ये गया. It's 10 times 100 और यहाँ पे क्या है? It's like 1000 का square root. This is just 10 upon 2 square root of 10 upon pi approximately 1 है ये पूरी चीज. This is just 5. So 5 is the answer. Third answer 5. Next question. Fourth question. Fourth is two bodies AB connected by light rigid bar 10 meter long moves in two frictionless guides as shown in the figure. Okay, B starts on rest when it is vertically below A. It's vertically below A, तब B rest start होता है. Fine. If the velocity of B is found to be 138, blah blah blah, when x is equal to something, find beta. अच्छा. Oh God, मुझे सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं तो ये बोला है कि पहले इनिशियली ये ऐसा था. यहाँ पे C भी जुड़ा हुआ है. Oh God, ये तो सही नहीं हुआ. And yeah, okay, it's going like this. And velocity is found to be this thing, right? Frictionless is a कुछ assuming, yeah. Okay, maybe it's doable. Work energy theorem. I guess that could be the thing. So ये बस नीचे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है. So string constraint से अपन rod constraint whatever. From there you can figure out कि इसकी velocity क्या होगी अगर इसकी velocity पता है. अच्छा तेरे को पता नहीं है ना, that's the thing, right? But you can find out a relation. और फिर क्या है? Energy consideration, because इसका आपने को पता होगा क्या velocity रहने वाली. Right? It's complicated but it can be done, I guess. Let's do it. So A का क्या हो रहा है? पता नहीं. B का आपने को just say velocity is u.
That's what you want to find, right? Of course. So same velocity c की भी रही होगी. So c is also moving by u like this. Oops, u. What is a moving with? तो ये एंगल थीटा अपने को पता है, राइट? x की वैल्यू क्या है? x is 6 and टोटल लेंथ कितनी थी इसकी? 10 मीटर. So this must be 8 of course. ये एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ. 53 डिग्री. You get the thing. So इसका ये वाला कंपोनेंट, so कोसाइन ऑफ 53 डिग्री, राइट? इसका कोसाइन क्या है? 6/8 which is 3/4. So 3/4 u यहाँ पे रहने वाला इज इक्वल टू, इसको तुम b बोल दो अभी के लिए. Okay, इसका component along this thing, that's just what, like cosine of this angle, basically sine of this angle, you know. So like 8/10, which is 4/5. Wait, 5g, sorry. So 4/5 of, yes, 4/5 v, which means कि, you know, v is just 3/4 of u. That's gonna do the thing. तो अपने को सब कुछ पता है क्या हो रहा है. So इसी पर एनर्जी अपन निकाल सकते हैं. So just half mc u square plus half mb u square plus half ma times ये चीज का square, which is, you know, 9/16 u square, right? That's the thing. And this must be equal to, ये मैंने correctly तो किया ना, I guess. Yeah. What could have gone wrong? I don't think कुछ गलत हो सकता है. Sure is cosine of that angle, which is of course 3/5, और यहाँ पे, you know, उसका complement आ जाएगा, which, yeah, okay, and that's just equal to the, you know, potential energy का जितना change हुआ. So ये नीचे आ गया है और ये भी नीचे आ गया, right? Okay, तो ये कितने से आया? x से नीचे. So this is mc times g times x. Okay, plus ये भी नीचे आ गया है. So कितने से? I mean, ये चीज x से हो गई change. पहले ये 10 रहा होगा, अब ये 8 हो गया है, right? So 2 से नीचे आया होगा. And x is of course 6, so it's like this times 6, so 6 mcg, and then plus ये चीज 2 से नीचे आ गई because this was 10 and ये 8 है, 2 है, so 2 mag. That's the thing now. Okay, इसमें values put करने हैं and you'll get the thing. So ma क्या, दोनों ma mb 200 है, cool, right? use g is equal to 9.8, fine. mc क्या दिया है? 100, so ये जगह 100/2 is like 50. Hey, you know what? सारे वैसे भी reduce होने वाले, काम करो. We'll just say ma को अपन 2 units बोल देंगे, जहाँ पे 1 unit यानी कि 100 kg है, by the way. और mb is also 2 units and mc is just, you know, 1 unit. That should have worked. Okay, बस वो चीज़ put कर दो यहाँ पे. So mc is just one, that half u square plus ये हो जाएगा 1. So sorry, ये हो जाएगा 2, right? So, plus u square, and then you got ये भी 2 है, so just 9/16 of u square. That's equal to, so mc को अपन ने क्या किया? 1 पुट किया, so 6g, plus ma को अपन ने 2 पुट किया, right? So 4g, that's 10g, like that, which is 98. चलो करते हैं इसको. So you got 3/2, I guess, right? 3/2 and then plus 9/16, right? That times u square is equal to 98. This thing is, चेस को 8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जाएगा 24, I guess. 24 plus 9 is 33. What? Wait, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? Yeah, it's right. 24 plus 9 is 33. What? Yeah. So 33/16 u square is equal to 98. 3 का मल्टीपल नहीं है ये, unfortunately. Seriously. ये तो कुछ हो गया. ये कैसे हो गया? I mean, कुछ गलत हो गया अपना? नहीं यार, सब कुछ सही तो लग रहा है मुझे. 24 plus 9 is 33 for sure. Of course, it's 33. So 33/16 and then got u square. That should have been the thing. What could have gone wrong? Nothing. That's the values. Like u square is just equal to 16 times 98/33. I don't get it यार. 33 और इसमें कोई prime factors है नहीं, तो ये 9.8 क्यों बोला इन लोगों ने? Well, whatever. इसका जो square root है, that's what we care about really. Oh God, I don't want to be doing this. ये square root तो कुछ ही कुछ value है, यानी ये अपन कभी कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में. What if it was like 32 or something? That's not the thing. It's not 32, right? क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? So item 6 is that.
and you just want what velocity of b basically ढूंढनी है अपने को. There's 138 beta centimeter per second. I don't get it. इसमें 138 का कहाँ से रोल आ रहा है? What's the square of one? Okay, 38. You know, okay, it's like 1.38. अच्छा, approximately beta ढूंढ लेते हैं, right? That's one thing we can do. So इसमें approximately 32 बोल सकता हूँ. Then it's going to be like 49 or something. Yeah. So you would be 7. So you are saying कि 7 meter per second, right? That's the thing. Yeah. Which is of course 700 centimeter per second. So beta क्या हो सकता है? What 13 point? Oh God, this is not. Maybe 5 because yeah. ठीक है, बीटा को 5 करके बस आगे मूव करते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसका अच्छा आंसर है कोई. या तो मैंने कोई गलती की है जो कि मुझे ढूंढने में 1000 साल लग जाएंगे, या फिर एक्चुअली में इतना ही खराब है. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. Okay, a body is projected vertically upward from ground with speed of 20 meter per second. After 1 second, the body explodes into 2 parts in the ratio 1:3. Okay, body को ऊपर प्रोजेक्ट किया from ground with speed of something. After 1 second, body explodes into 2 parts, ratio 1:3. Okay, after explosion, the large mass moves horizontally. ठीक है, largest mass. Of course. So like okay, ये जो 3m है, ये m है. So this is moving horizontally. Okay, and this अपने को पता नहीं कैसे move कर रहा है. Okay, if the maximum height reached by the smaller mass 19x in meters, find value of x. और कितना कुछ तो भी velocity दी थी, we don't care about that. वैसे भी इसको अपने को बस तोड़ना है, right? That's all. Yeah, that's all. So think about it. Initially ये दोनों 20 से जा रहे थे, अब ये 20 से नहीं जा रहा है और इसको ऐसी velocity मिल चुकी है, right? So let's just say इसकी initial velocity दोनों की u थी 3m. u is of course 10, but अभी के लिए मैं u use कर रहा हूँ because generalized, right? और अब इसकी velocity v है, पता नहीं क्या है, but है कुछ तो भी. So क्या हुआ होगा, इसमें momentum कैसा पड़ा होगा? 3mu in this direction plus 3mv in this direction. तब ये ऐसा हुआ होगा, right? So उसका opposite यानी कि 3mu in the upward direction plus 3mv in this direction. अपने को ये momentum u पे लगाना पड़ेगा, right? All we care about is this thing of course because ये horizontal course को change कर रहा है, which we don't care about really. Actually doing it, it's going upwards, so yeah, right? So इसकी vertical velocity क्या हो जाएगी? That is upon m, you got 3u in this direction, like okay, ये हो जाएगा 4u basically. अपन कर सकते हैं फिर, right? और इनिशियल अपन हाइट ढूंढ लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ रहा. आफ्टर एक्सप्लोजन, okay, body explosion into 2 parts. After explosion, the last part, maximum height reached by the smaller mass is 19x. Meters final level of x. ठीक है, initial height क्या है? So in 1 second, velocity क्या थी? 20. So 20 times t is just 20 minus half t square, so like 5 t square, just 5. Initially 15 थी plus, right? अपने को चाहिए maximum height. So अब ये maximum height क्या reach कर सकता है? From this 0 point. Yeah. So this is the thing. You got to must u square of it. So 4u का square is equal to yeah, right, 2g times whatever the relative height will be gained. So h is just equal to 8u square upon g, right? I guess so. That's the thing. So this plus that, or u कितना है? U is 20. No, yeah, it's 20 of course. So it's gonna be 20, right? So 8 times 400 upon g, approximately 10. ये गया is 320. So this thing plus 320. Wait, is that for real? मुझे भी अजीब नहीं लग रहा ये. Minute did become 4u. Okay. Time required कितना रहेगा? So 40 upon 10 is like 4 seconds रहने वाले. So in 4 seconds क्या हो सकता है ये? This is now moving with 8 seconds. And this is moving with 80 of course. 80 times 8, that's gonna be 640 minus 5 times t square, 5 times 8 plus square, 5 times 64. That's going to be 320. That is just
320, and yeah, that's the thing. So yes, 335 is the thing. Okay, next question. So that is 19x, इसको 90 से divide करो. So let's think about it. First 19 यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को. 40 minus 3 is, sorry, 4 है ये, 30 minus 2, 5 of course. 5 कब आता है? Just think about it. 19 times 7, that would be 7, and नहीं बहुत बड़ा हो गया. Okay, 1 something. ठीक है ना, 7 try. 7 and then you got 63, which is, so 143, approximately that. Huh, interesting. I guess 5 try करना चाहिए, but that's going to be like 5 and 45. That's not making sense. 7 is the thing you can do, right? 7 पे ये shit, you 1 3 kill. 8 try करो. 8 and 72 is gonna be 1 5. बहुत बड़ा हो गया. Not good, not good. How is this 19x? Doesn't make any sense. No, I don't get it. It can't be. Can't be, of course. 3:1 रेशियो में स्प्लिट किया मैंने, ऊपर ही जा रहा था 20 से, इसको पूरा वापस करना पड़ेगा. Let's see if that is the thing. क्या 335 is still the velocity, or sorry, the final height or not? Right? Yeah, चलो वापस करते हैं इसको पूरा. Okay, M3M. अब लोग सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी देखना, वैसे भी तो फर्क नहीं पड़ रहा. सो इनिशियली दोनों 20 से जा रहे थे, अब इसका 0 हो गया. सो 20 का चेंज हुआ होगा, राइट? सो ये 3m का चेंज हुआ, इट्स लाइक स्मॉलर एन 1m ऑफ कोर्स. सो 3 times 20 का इसमें चेंज हुआ होगा, राइट? और यहाँ पे अपॉन 1 दैट्स गोइंग टू बी 60 का चेंज हुआ इसमें. सो दिस मस्ट हैव नाउ बिकम 80, बिकॉज इसमें नेगेटिव है, इससे पॉजिटिव चाहिए, सो इट्स गोना बी 80 लाइक दैट. So that's the thing. अब ये 80 से ऊपर जा रहा है 1 सेकेंड में. ये ऑलरेडी, oh god, 1 सेकेंड के बाद में चेंज होएगी ना वेलोसिटी. इट वोंट बी दिस, इट विल बी 10 एक्चुअली. सो ये 10 10 40 लगने वाला है, बिकॉज या ओके, इसलिए मेरा गलत हो रहा था. फाइन. सो पहले सेकेंड में क्या हो रहा होगा? सो t/2 1/2, then you got v plus u is just, you know, 20 और फिर बाद 10 है, राइट? सो 20 plus 10, that's going to be 15. 15 plus अब क्या है? अब 10 velocity, राइट? अब इसकी वेलोसिटी 40 हो चुकी है, एंड अब ये हाइट कौन सी अचीव करेगा? बट अच्छा, इसको u बोल दो ना. सो u square is equal to 2gh. h is just equal to square, yeah, h is equals to u square upon 2g, which is 1600 upon, so 2g is, you know, 2 times of 10, 20, so it's going to be 80 like that, right? Which is 95. So 95, is this a multiple of 19? Yeah, it's 5 times of that. So x is 5. Next question. काफी टाइम लगा नहीं करने में. I know, कभी कभी होता है. Okay, आंसर की डायरेक्टली. Fine, let's do this thing. Okay. Oh, don't swear. 8 to 2. It's 8 to 5. And oh, sorry. Third का क्या है? 5. Fourth का भी 5 है, इसका भी 5 है. Okay, yes, that's right. तो बस इसका 8 है. I don't know, इसमें यानी क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन लिखा ही क्या था उसमें एग्जैक्टली, उसको समझा ही नहीं. Anyway, that's it. See you in the next video.